RJ Karishma. So Ahsaas Channa, Gajraj Sir, Prajakta Koli, Navya Nanda, Srushti Tawade, Amol Parashar. Very excited to have all of you here. You know, you're all stars in every one of you in your own right. You know, we always think that stars have it all and they're all perfect and, you know, they just have success after success. How does, has there been a failure this year that you've, gone through, have been tough for you to figure out and still made it out of it, You know, when you're a creator for so long, you get comfortable. And that's the thing about being a creator. The minute you get comfortable, you're just like, oh, I did not see this coming. And very recently, I also moved on to acting on a more professional front, where again, that's starting from scratch. So I remember between July and August, I think I had about 3 to 4 weeks when I just felt like, you know how you just feel like you're just falling and you're falling and you're falling and you're falling and there's no end to it. Because for the first time I'd reached a point where I just felt like I had a grip over life, and then suddenly everything changed and new challenges happened. So I think that 1 month between July and August is when I felt like I failed miserably, but thank God for that. Now I see why it happened and I'm grateful it did. एक तो मैं रील का जो चस्का है उसको नहीं रोक पाता हूँ, तो उससे मैं हर महीने फेल होता हूँ. 15 दिन कंट्रोल करता हूँ, फिर उसके बाद एक कुछ आ गया, मैं नहीं तो कौन बे, तो फिर उसके बाद टक 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 चलता रहता है. वो एक मेरा कांस्टेंट फाइट है. और मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है कंजम्पशन, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए. मतलब अब इसको कैसे डिसाइड करें कि एल्गोरिदम होता है ना, वो आपको फिर वो जैसे जो डॉगी वाली स्टोरीज आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं कि पुअर डॉगी को सेव किया तो आपको अरे बेचारा पपी, तो फिर वही आते हैं तो आपको अच्छा लगता है वो देखना. तो फिर वो हजारों रील देख लेता हूँ मैं, सैकड़ों रील देख लेता हूँ मैं. तो या फिर कि हेल्दी खाना, तो उसके हिंदुस्तानी और विलायती बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस हैं कि हरी सब्जियां कैसे खाई जाती है, और इतने बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनते हैं ना 1 मिनट के अंदर, टक 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 करके. तो फिर लगता है नहीं, ये तो मैं अपने फायदे के लिए देख रहा हूँ ना. अब वो फायदा रात को 11 से लेकर 1:30 बजे तक चलता रहता है, तो उसके अंदर मैं फेल कर रहा हूँ. और मैं कोशिश, मतलब ये मेरा क्या रेजोल्यूशन ना, कि अगले साल मैं कैसे इसको राशनिंग करूं मैं, कि मैं 15 मिनट, वो अलार्म भी मोबाइल में भी लगा हुआ है कि टाइम आउट, उसको लेकिन फिर मैं बोल देता हूँ कि आज के लिए इसको वो कर दो, डिस्कार्ड कर दो, आज के लिए, आज पूरा दिन देखेंगे. तो वो एक फाइट है. तो मेरी उम्र में अगर ऐसी फाइट हो रही है हाफ सेंचुरी के बाद, तो 20-22 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में तो कितनी खतरनाक होती होगी ना ये बात. आपने जो बोला उस पर आप लोग काफ़ी बातचीत करने वाले हैं, तो थैंक यू ब्रिंगिंग दैट पॉइंट अप. बट आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन तक वेट करने की जरूरत नहीं, आप कल से भी कम कर सकते हैं सर. ऐसा कुछ है नहीं कि 20 दिन बाद ही करेंगे. नहीं, क्योंकि अभी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे ना अभी ईयर एंड वाले. तो ठीक है, आप समझ गए. बिल्कुल करेक्ट. कि राउंड टेबल, ईयर एंड इंटरव्यूज, किस इंटरव्यू में मुझे जाना चाहिए था, मुझे नहीं बुलाया गया. I just started living this year, and fatak se I failed on national television, like when I got eliminated out of the show. But luckily, my goal was not to win at all, like day one se. So my goal was to not be bothered by whenever I fail. Usme I passed. I think for me I think I failed myself this year, because I think maybe in moments I wasn't kind enough to myself. I blamed myself for a lot of mistakes that, we all make as human beings. And I think I could have been kinder to myself this year and had more confidence and more belief in who I am as a person. So I think that's where I think I failed this year. And I'm going to try and work on that for next year. But for the first time in my life, I couldn't sleep, which I took very personally. And which is why I'm putting it in a failure space. I failed to sleep on some days for 3-4 days. Why do you think that happened? Still looking for those answers. वो चल रहा है. फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें की मैंने. I tried a lot of things. I quit coffee for a while. I quit smoking. I tried to fix my sleep patterns. I went away I traveled for 2 months. बहुत सारी चीज़ें की. But वो क्या हुआ? I think वही दिमाग का ही खेल है सब. I think I've stopped using the word failure. I mean, earlier, even if I was rejected for a project or in an audition, I used to be like, I failed. This is a failure. But I think I was being hard on myself.
and I've really stopped using the word failure. So I think for me, it was कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक चीज़ आपको मिल जाती है, आप उसके पीछे भागने की कोशिश करते हो और आप खुद को भूल जाते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को भूल चुकी थी. मतलब लिटरली मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं बस वीडियोस बना रही हूँ, मैं व्यूज़ के लिए देख रही हूँ, मैं लाइक्स देख रही हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ, पर मैं खुद को भूल गई हूँ. आई थिंक ये मेरा फेलियर था इस साल के लिए. I noticed, which I would like to point out, is I mean, these people are much younger than me. I look young, I know, but I'm much older than I look. और यार हमारे टाइम पे ये हमारे टाइम पे वाह I love अमोल पराशर ने हमारे टाइम पे 30s में कौन है, 30s में हाथ उठाओ यार, कौन है यार. हमारे टाइम पे ये being kind to yourself वाली बातें होती नहीं थी. But it's like when I look back at being 23, 24, तो मुझे लगता है यार हम तो hard on ourselves ही थे. So I'm happy for the younger lot who are better equipped at these things. उनको बता रहा है कोई कि यार ये सब सही नहीं है. हम तो मतलब क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, हार्ड ही थे यार, हर बात पे हार्ड ही थे अपने आप से. अभी हो क्या रहा है ना, मुझे दिख रहा है आई थिंक कि ना सोशल मीडिया क्यों शुरू हुआ था, हम ना एक्सप्रेशन के लिए. मुझे लग रहा है कि दैट्स वेयर वी ऑल स्टार्टेड, दैट इट वाज अ वे फॉर अस एवरीबॉडी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स नो मैटर वे दे वर, नो मैटर वे दे वर फ्रॉम. बट अब क्या हो रहा है ना कि जैसे सर ने भी बात की एल्गोरिथम्स की, इट जस्ट सीम्स दैट एवरीथिंग हैज बिकम कंटेंट. Content is everywhere. I just feel so exhausted anytime I open my apps. It's just like it's all pervasive. Everything is content. So what the authentic expression seems to have just gotten lost. कि एक ज़माने में खुद के लिए कर रहे थे, अब ना algorithm बोल रहा है नाचो तो नाचो. If the algorithm is saying that you point here, point there, and everyone's doing that. So I mean, the danger that I see over here is that it seems that because everyone's doing everything to serve the algorithm, everyone seems to be becoming like each other. So I actually first want to ask you all, do you also feel this? Do you feel like there's this exhaustion that is happening? And B, of course, how do you stay true to yourself and not the algorithm? तो क्या है कि जैसे ये वैसा है कि किसी ने रेस्टोरेंट खोला एक लाइन में और वहाँ पे बावर्ची बड़ा अच्छा है और वो उसके यहाँ लोग खाना खाने जाते हैं. अभी धीरे धीरे ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि जो भी खाना खाने जा रहे हैं वो बोल रहे खाना तो बड़ा अच्छा है, हम भी पकाते हैं चलो, और उस लाइन में 100 रेस्टोरेंट खुल जाएं और सारे खाने वाले हैं वो सब बावर्ची बन जाए. तो आज की तारीख में हो ये रहा है कि सब जो खाने वाले हैं वो सब बावर्ची बन चुके हैं, बनना चाह रहे हैं. जैसे मैं करिश्मा के जब क्लिप्स देखे तो मुझे लगा यार मुझे भी कुछ करना चाहिए क्या, ऐसा मुझे रेलेवेंट रहना है क्या, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या मैं एड फिल्म डायरेक्ट करता हूँ, साथ में मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे. वो जो एक बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल पहले तो बड़ा इससे मुझे बड़ी उलझन हुई कोविड से पहले कि कैसे करना क्या यार, बड़ी कि मतलब 30-30 लाख 50 लाख फॉलोअर्स यहाँ पे गिन के मतलब लाख तक नहीं हो रहे, रगड़ते रगड़ते घिसते. तो वो जो फाइट है कॉन्स्टेंट की, सबको सब कुछ क्रिएट करना है. हम लोग यहाँ हैं और शायद हो सकता है 10% लोग यहाँ नहीं हो, सामने बैठे हैं, जो हो सकता है कि वो पैरेलल यूनिवर्स में कुछ उनका कंटेंट क्रिएशन चल रहा हो इसके बीच में, कि जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसमें से जो मिला मैं इसका कुछ क्रिएट कर देता हूँ. वो जो एक फाइट है, वो जो एक चस्का है, वो जो एक सुरंग है, उससे निकलने की जरूरत है. मैं एक शादी में गया 10 दिन पहले, लेकिन मैं दंग रह गया. वहां पर 7 साल से लेके 70 साल की उम्र के लोग कंटेंट क्रिएशन में लगे हुए हैं. कि 70 साल की 60 साल की बुजुर्ग महिला घूंघट ऐसे हटा के सेल्फी. गजराज मैं एक्चुअली में कुछ घंटों के लिए मैं शॉक में चला गया कि ये क्या हो गया है. तो सब एक कहीं ना कहीं एक चीज आ गई है कि हम सबको इन्फ्लुएंसर बना. मैंने तो अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता हूं. मैं जो मुझे काम आता है एक्टिंग डायरेक्शन थोड़ा सा कर लेता हूं मैं, वो ठीक है. फॉलोअर्स बढ़े तो बढ़े, नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े, कम हो तो कम हो, जरूरी नहीं है. हम सबको सब कुछ बनाना है. हम सब मैं जैसे मुझे मेरे दिमाग में नव्या वाला भी आया था, यार ये पॉडकास्ट सही है यार. फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मेरे माँ बाप तो इतने इंटेलिजेंट जवाब नहीं दे पाएंगे. मैं कैसा हूं वो सेकेंडरी होता जा रहा है. मुझे ऐसा अमोल जैसा बनना है. अमोल ने ये जो ट्रिपलिंग में वो सीढ़ियों पे जो सीन किया यार, क्या बात है. रुला दिया, मुझे वैसा करना है.
I just have one thing to say. आपने कहा कि जो ना आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो. All I want to say is you are an actual influencer. आपकी जो फिल्में इतनी इन्फ्लुएंस की हैं सबने, बधाई हो से लेकर अभी मजा मा. You are talking about such incredible things, such great social messages. You are a real world influencer. इस चीज को एक लाइन में ऐसा बेन सर बोल रहे थे, बहुत सारी लाइनें, तो मतलब एक लाइन मेरे दिमाग में आई कि आई थिंक जो हो गया है, जो सर कहना चाह रहे थे कि पहले की जनरेशन में प्रॉब्लम होती थी कि यार इसने ना काम को जीना बना लिया है, काम को जिंदगी बना लिया है इसने. अब जिंदगी काम बन गई. अब हो रहा है कि यार मैं खाना खा रहा हूँ, ये काम तो नहीं है, इसमें से कुछ कंटेंट निकाल रहा हूँ, विच इज अ ट्रबलसम थिंग आई बिलीव, कि आपकी लाइफ ही सडनली काम बन जाए, तो वो तो और डीप चले गए आप उस जाल के अंदर. वो देखते हैं और लगता है कि यार ये भी कर सकता हूँ मैं. देखने में तो आसान लग रहा है ना सब. मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से हमारी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ में जो ये 2 साल आ गए ना, जहाँ पे हद से ज़्यादा वक्त आ गया सबके पास, एकदम से फुर्सत हो गई, एकदम से ऐसे हो गया कि क्या करें. 24 घंटे दिन के महसूस होने लग गए थे बड़े टाइम बाद. वेयर नाउ इट्स बिकम मसल मेमोरी, जहाँ पे अगर कुछ नहीं है करने को या 2 मिनट के लिए कोई बात नहीं कर रहा है तो फिर तो इंस्टाग्राम खोलना बनता है. जैसे आई टेल यू व्हाट हैड हैपेंड, मेरे साथ भी वही हो गया था. थैंक्स टू मुंबई ट्रैफिक मैं बड़े सारे घंटे गाड़ी में बिताती हूँ. मैं थाने में रहती हूँ मेरे मम्मा पापा के साथ, तो कहीं पे भी अगर मेरा आना जाना होता है 1.5 घंटा तो पकड़ के चलो, 1 वे. तो ऑन एन एवरेज मैं दिन के 3 से 3.5 घंटे स्पेंड कर रही थी गाड़ी में. अब उस टाइम पे मैं बड़ा पहले सोचती थी कि नहीं मैं अपने ईमेल्स कर लूँगी, मैं अपने सारे कॉल्स कर लूँगी, मैं अपने सारे आइडिएशन वाले काम कर लूँगी. दिस इज़ गुड, आई गेट दिस मी टाइम, आई टेक अ नैप. नथिंग, आई वॉज ओनली सर्फिंग इंस्टाग्राम. एंड आफ्टर अ पॉइंट ना, जैसे आप अपने आप को, जैसे आप कह रहे थे ना, आप अपने आप को बताते हो कि नहीं भाई ये भी तो मेरा काम है, मेरे को जानना चाहिए ना कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, व्हाट इज़ ट्रेंडिंग राइट नाउ, which audio has that arrow, which one should I save for my next reel, what idea should it be. But after a while it gets so automated that it's you there's a possibility you're not even registering the content you're watching. So us time pe then one active change I made for myself, which I'm very proud of, is I started carrying my Kindle everywhere with me. And I think this is a stand we all have to take for ourselves. तो जितनी भी बार हम इसको डिस्कस कर ले, मुझे ऐसा लगता है द ओनली वे एनीथिंग कैन एक्चुअली कम थ्रू इन अ वे वेयर वी गो बैक टू सर्फिंग द इंटरनेट एंड नॉट द अदर वे अराउंड, इज इफ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ. Can I add to this? Yes, please. As she mentioned ना कि 7-8 साल के बच्चे भी इसी क्या कहते हैं रेस में लगे हुए हैं. तो मैंने मोस्ट ऑफ माई लॉकडाउन आई हैव स्पेंट विद वेरी लिटिल किड्स बिकॉज आई एम सराउंडेड विद किड्स ऑल द टाइम. तो उनके मुंह से ना मैंने वही सब बातें सुनी है जो पॉपुलर हो जाती, कूल हो जाती है ना. बाकी लोग बताते हैं उनको कि ये सब कूल होता है, तो वो वही बातें करते रहते हैं और वही वीडियोस निकालते रहते हैं, उसकी रील्स बनाते रहते हैं, क्योंकि किसी ने बताया कि ये सब कूल होता है. और जब फ़ोन नहीं होता उनके हाथ में तब एक्चुअली कूल बातें कर रहे होते हैं वो उनको पता ही नहीं है कि ये उनके रियल थॉट्स है जो एक्चुअली कूल है. यही तो बातें होनी चाहिए. और जब मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे भी मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था बनाना, क्या कहते हैं, लिखना वगैरह. तो वो एक थॉट कांस्टेंट था मेरे दिमाग में कि मेरे को ना कोई भी चाहे कुछ भी ट्रेंड चल रहा है, मेरे को उसमें पार्टिसिपेट तब करना है जब एक्चुअली मुझे मज़ा आ रहा है, वरना मेरे को एकदम दूर रहना है. और एक भी मैंने नहीं किया आज तक, मेरे को मज़ा ही नहीं आया किसी ट्रेंड में. तो खुद ट्रेंड बन गई और बोल रही है कि मज़ा ही नहीं आया. Thing that happened. So मेरी एक friend की niece है. It's so funny how she has a very regular accent when she's speaking most things, but when she has to use the words subscribe or like or follow, she has an American accent. Follow me is very American. Guys is very American. I'm just like, Shreya, I mean, it's funny, great, but it's problematic. So I want to, I mean, as a follow up to that, I feel, you know, एक ज़माने में ना आर्ट थोड़ा elitist होता था, in terms of the fact that not everyone had access to it, not everyone had the resources, the money to be able to create art, etc. And then of course because of, as you said Mukesh bhai, because of internet, social media, phones, everything has become accessible, right? It's become democratized. कोई भी बना सकता है art, कोई भी content बना सकता है. Everybody is making content right now. But if everything is art, then is anything art? So how do you at this point, you know, find something unique to say
when everything is content. But what is that fine line? Abhi aap, in the same problem statement, we are saying we want to be relevant, but at the same time we are saying we don't want to follow the trends. So what do we want to do? So that's a personal call, because this, eventually somewhere there the lines are blurred. मेरे को relevant रहना है, आज क्या relevant है वो ये reel है, फिर आप बोल रहे हो मैं ये नहीं बनाऊंगा क्योंकि तो सब बना रहे हैं, तो फिर आप relevant नहीं रहोगे. So I think more, I would say for me, more than relevant, the better word to use for myself is who am I? बहुत, again, we can go really deep into those kind of questions. But मैं कौन हूँ? And we all struggle. हम सब सोच रहे हैं, of course. Obviously हम सब सोच रहे हैं. हम बना रहे हैं, हम बेच भी रहे हैं लोगों को content. पर हम सबको बोल भी रहे हैं कि यार ये तो जो ड्रग है ना ये थोड़ा addictive है, मैं तुमको बांट रहा हूँ लेकिन ध्यान से लेना, ठीक है? और ज़्यादा मत लेना. So it's I think, I mean, people on this side of the room we are all struggling with this thing which may border on hypocrisy. कि ना अभी हम ही इससे बने, यहाँ पे जो बैठे हैं सब इंटरनेट से बने भाई. ये भी इंटरनेट पे डालेंगे हम लोग. ये भी इंटरनेट पे ही जाएगा. फिर हम सबको बोलेंगे देखा कि नहीं, नीचे शायद कमेंट आएगा, अच्छा तो कोई फॉलो करेगा, यार अमोल ने क्या फनी बात बोली, हाँ बड़ा मजा आएगा वो कमेंट पढ़ के. फीलिंग आएगी मुझे, बिकॉज दैट्स what we are taking from internet is feelings. You know, it is giving us feelings, and feelings are drugs. No, so I was also asking from a place of ki, I mean, like, let's ask Karishma. You know, Karishma has obviously again broken out this year. So much great content that has come from you. Karishma, आप जब अपना content बनाते हो, आपको how do you decide कि जो ना मैं जो भी कह रही हूँ, you know, और जो मैं भी कहना चाह रही हूँ, this is going to be interesting or different or unique to the audiences. How do you know or decide that this is the way whatever I'm putting out there is going to be relevant to the people consuming it? आई थिंक रिलेटेबल कंटेंट इज़ द किंग, जो मुझे लगता है. क्योंकि अगर आप फनी नहीं है ना चलेगा, अगर आपका कंटेंट जो है रेलिवेंट है ना, सामने वाला बोल रहा है अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, वहाँ आप जीत गए. मतलब वहाँ आपको पता है कि आपको लोग देखेंगे ही देखेंगे, शेयर आपका वीडियो होगा ही होगा. जहाँ आपने दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हो ना, अरे जैसे हम ट्रेंड की बात कर रहे थे अभी कि हम वैसा कर देते हैं, वो तो सब लोग देख रहे हैं ना, उसमें नया क्या है. मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कभी ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती हूँ. जैसे प्राजक्ता इतना अच्छा डांस करती है, वो तो मुझे नहीं आता है. जेन्युइनली आई स्वेयर मैं कभी नहीं कर पाऊँगी. आई ट्राइड वंस बट इतना बुरा था वो कि मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाई बिल्कुल भी. So, you know, content of course is one, and I really want to actually open this question up कि Ahsaas, Navya, as you do so many series, you have done a podcast this year. There is so much decision making that goes into what is it that I choose to do with my time when there is so much that can be done. How do you decide? So I think clarity is very important for me. I am very clear that I want to become an actor. So I think having that clarity and the courage to say no to things, I think really helps me. And that is something that I have very recently learned, because I was somebody who was always anxious about losing out on work, not being relevant, and also like romanticizing the whole concept of constantly being busy and saying yes to everything and being everywhere. And on social media, I think I try to be myself as much as possible, because yes, there are so many trends that are happening. Everybody is trying to run the same race. Even I am somebody on social media who follows the trends, okay? That's the most easy thing to do. I can't create content, I can't think, because I have a very bewkoof brain. I try to do it differently. Like if there is one dance trend that's happening, I try to make it different and my way. So I found my niche, I think, on social media, and there are like people who follow me and like me respective. They've been following me for so many years and they've not unfollowed. So I think I'm very grateful for that. So what I'm hearing is that obviously it's different for everyone, you know. Somebody who has sharp observations will go there, you know. I'm still trying to understand one thing, which is that, see, the other thing that I've started also noticing, and I feel like this is true for everybody over here. Everybody has to now has to do multiple things, you know, and it seems like almost a necessity कि अब ये करना पड़ेगा. You can't just be, you know, an actor only. अभी तुम्हें भी जो ना अमोल को भी
आना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, तुम्हें भी करने पड़ेंगे पोस्ट, यू नो, एंड तुमने जस्ट रील डाला है, रील में तुमने मजाक किया कि मैं डांस नहीं कर सकता, but तुमने डाला रील, you know, and the same way, you know, I mean, Navya, for someone like you who's you know has multiple companies, you're an entrepreneur, you're doing so much work in the non-profit space, the fact that you thought that you have to extend that by doing a podcast which has nothing to do with anything else, you know, so it's an absolutely different thing, but it's just one other part of your personality. Is it that you know, can you actually do just one thing and focus on that anymore? Is there a necessity and a need to be out there all the time? Is there a fear of, you know, कि मैं, if I don't do too many things, like एक तो होता है ना artistic exploration या excitement कि मुझे बहुत करने को मिल रहा है, कर सकते हैं, let's try it out, but then the other thing also, you know, or let's create an empire, the other thing is वो भी कर रहा है तो मुझे भी करना है, you know, or it's a little bit of insecurity also, will I, you know, be relevant? So what is it that's driving this need to be multi-hyphenates in many ways? So I think, I mean, you spoke about, obviously, you know, I've run an NGO and I also started a podcast, and I think for me it's a little bit different. I feel कि life ने मुझे बहुत कुछ दिया, and I feel कि the opportunities that I've been given more or less sometimes might not be because of the work that I've put in and might come for other reasons, but I feel कि वो opportunity मुझे मिल रही है, किसी और को नहीं मिल रही है, तो मेरा हक बनता है कि उसको मैं जितना भी use कर पाऊँ. And you know, whether it's a podcast, whether it's coming here and speaking, I feel lucky that I've been given that opportunity to do it, and I think that I need to make the most of it. I need to do everything, take everything, because I don't want to waste that opportunity, because I know how grateful I am and lucky I am to even be given that in the first place. So in terms of doing everything, I think that's where that philosophy comes from, that, you know, that could have been given to somebody else, it's been given to you. Do the best you can with it, you know, don't waste that opportunity. You're lucky to be given that opportunity, and I think I'm lucky to be sitting here, and I know that I've not worked, you know, maybe as many years as everyone sitting here today, but I've been called. And honestly, I thought about this, and I was like, you know, when I saw the round table and I said, oh my God, look at all these people who are here. And I said this earlier also, I said, कि I'm sitting like a fangirl. I feel like कि मैं बोलूँ ही क्या, मतलब life में मैंने 2 साल काम करके आपने मुझे इधर बुला दिया. And I feel like, you know, a part of me was like, you know, Nikhil, I don't know if I deserve to be sitting here. I don't know if I've done enough. I don't know if I've achieved enough to be here sitting with all of these people who've been working for far longer than I have. But then I said that, you know what, you have been given this opportunity, somebody else was not, and you need to go and make the most of it, and you're lucky to have it, and don't forget that. So I think I keep reminding myself that. And whether it's a podcast, whether it's a reel, whether it's an event, I'm like, okay, मुझे ये मिला है, अभी क्या कर सकती हूँ मैं इसके साथ? जाकर ठीक है बात कर लूँगी मेरे काम के बारे में, जो, you know, what I believe in as a human being, and I think that that's just what I try to follow across the board with all my work. It's just gratitude, be lucky, you've been given this, make the most of it. This is also the reason why you're here, Navya, because, you know, you are one of the few people who I know who has privilege and acknowledges it. Every single platform you've been on, you acknowledge that privilege. You constantly speak about it. Navya runs 3 NGOs. And you know, and it's not just something that she does on surface. I'm fortunate to have gotten to know her a little bit in the last couple of years, and she's really deeply invested in every single thing you do. And you know, and again, I think the podcast was really cool, and it was on the top 10 of all podcasts this year. So that's also why you're here. You have done really well this year. But no, I mean, anyone else has to add to what I asked? So मैं ये बोलूँगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या है? So there was also a time 20 years ago when we were saying यार आदमी को एक ही चीज़ बना दिया गया है, वो आदमी नौकरी करता है तो वो नौकरी ही करता है. Now we have an opportunity to be many things. So I think again what we are trying to draw to is that sometimes all of us may feel like कि यार ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है, या मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है. Exactly. This is the question that comes. Maybe what used to happen earlier was कि हम लोग को दिखते ही 4-5 लोग थे. हम फिर भी लोगों से इफेक्ट होते हैं. हम बनते अपने peers से हैं. We go to school, we listen to what is happening. Even when there was no internet, we were getting affected. You know कि वो क्या पहन रहा है, उसने स्पाइकी बाल कर लिए, मैंने स्पाइकी बाल कर लिए, उसने गोटी रख ली, मैंने गोटी रख ली. ये हम करते थे. Now what is happened is जो 4-5 का peer होता था या 10 का peer group होता था, वो बन गया है millions का. और अब दिमाग हो गया है, क्योंकि अब कितने लोगों को कॉपी कर सकते हो आप, और कितने लोगों के ट्रेंड फॉलो कर सकते हो, और सब अलग अलग कर रहे हैं अपना. So that is the psychological problem, I think, and this has nothing to do with anybody being evil out there. Mark Zuckerberg वो तो बेच रहा है, जो लोग खरीद रहे हैं. I've always spoken my mind कि जो भी ऐसा जो होल्ड बैक करने वाली बातें हैं ना, वो सारी मैं पहले बोल देती हूँ. तो
वही चीज़ मेरे गानों में भी निकल के आती है, फिर कुछ भी अगर मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डालूँ तो उसमें भी वो निकल के आती है कि जो बात नहीं बोलनी है, जो बात ऐसा कोई भी होल्ड बैक करेगा कि शिट ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो सबसे पहले वो बाहर निकलता है। तो अगर वो आपकी नेचुरली ऐसी आदत है कि यू आर बीइंग योरसेल्फ एनीवे व्हेन nobody is watching and you're very comfortable with it, then automatically you become comfortable being that person in front of the camera. तो वो आसान हो जाता है अगर आप इनकलकेट कर लो वो क्या कहते हैं, समझ गए होंगे आप तो। इतना आसान होता है? इज इट दैट इजी? पहले क्या होता था, जब मैं दिल्ली में थिएटर करता था तो वहाँ पे जगह थी मंडी हाउस, तो वहाँ पे 10, 15, 20, 25 दोस्त मिलते हैं, उन सबको अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो बता दिया कि मैंने ये किया, मैंने ये किताब पढ़ी, ये नाटक पढ़ा, मैं यहाँ घूमने गया, और उसके अंदर कुछ काम की बात हुई, अच्छा वहाँ पे ऑडिशन हो रहा है या ये चीज़ हो रही है, तो आपको पता चल गया। फिर वो चीज़ कॉफ़ी शॉप हो गई, चाय की टपरी। तो मेरी समझ से जो सोशल मीडिया है वो चाय की टपरी है, जहां पर सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं है, लाखों करोड़ों और लोग भी हैं। मैं उन सबसे दोस्ती करना चाहता हूं, मैं उन सबको अर्ज है एक अंदर से बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने एक एड फिल्म किया 2 साल पहले, जिसमें मैंने पहली बार 3 पीस मैंने पहली बार पहना, और उसकी पिक्चरें जो है फोटोग्राफ्स पोस्ट किए, वो पोस्ट किए, और 1-1.5 महीने के अंदर मुझे उस पोस्ट की वजह से मुझे एक काम मिला, क्योंकि जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कभी ऐसे लुक में देखा नहीं था। उनका नजरिया आया, अच्छा हाँ नहीं, ये मिडिल क्लास से थोड़ा बढ़कर कर सकता है, ये करवाया जा सकता है इससे, समझ रहे हैं? तो ये वो जब ऐसी चीजें होती है तो आपका होता है, अरे यार आपका पेंडुलम हिलता जोर जोर से, नहीं इससे तो काम भी आ रहा है, कुछ हो रहा है। What I'm understanding, sir, I think कि ये obviously we are the first people to be on these. I mean, like we don't have historical perspective of this, ना. We can't look back and say कि यार ये गलत हुआ, ये सही हुआ. We are going through it and we are learning. But वही अभी मुझे लगता है self awareness हमको शायद आना चाहिए. But sorry, Prajakta, you wanted to. I think, and I'll say this purely from a creator perspective. I mean, consumer के लिए अलग हो जाता है थोड़ा बहुत, but कहीं पे मुझे लगता है, and I've learned this about myself also, कि हम कभी-कभी ये भूल जाते हैं कि ये काम है तो इसमें discipline की ज़रूरत है. When it comes to creating content, और बड़ा dicey सा हो जाता है, because when you're a creator 24/7 दिमाग भागता है. जहाँ जाओ जिससे मिलो ऐसा लगता है कि यार ये इस कॉन्वर्जेशन में मजा आया, इसके बारे में कुछ लिखूं क्या बाद में जाके. But then when you really think about it, it takes you some time. I mean, I've been doing this for almost 8 years, तब जाके अब ऐसे वाले thoughts आते हैं कि हाँ भैया अगर ये अब ज़्यादा हो रहा है तो take a step back, take one day, figure it out, think, and you know the tools for it now. But something that has helped me from getting overwhelmed as often as I used to before is I think discipline. I think understanding कि अगर मैंने आज की डेट में content भी create करना है, merch भी बेचना है, acting भी करनी है, brand collabs भी करने हैं, tour पे भी जाना है, social work भी करना है, तो I need to know कि A, I chose it, and B, it all still entails as my work no matter how much I am passionate about it. So I think the minute that bifurcation happens in your head, you will know when to take a step back and you will know exactly how to reach a point. Because if you really think about it, मैं बड़ी ना पहले वो हो जाती थी कि नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं इतनी सारी चीज़ें, but it's not that tough. It's really not that tough if you look at it with discipline. And I think that changed a lot for me. So maybe trying that. This is very well said, because मैं भी काफ़ी चीज़ें करता हूँ, उसके बाद मुझे टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है. You know, I am always like 11 घंटे हाँ, मैं कह रहा कि मैंने काफ़ी चीज़ें आज अकम्प्लिश कर ली, फिर भी मैं भी कैसे बैठा हुआ यहाँ पर. सबसे ज्यादा कंटेंट तुम ही कंज्यूम करते हो निखिल. करेक्ट है, मैं तो मानता हूँ. सारे शोज, सारी फिल्में तुमने देखी हैं. मेरी गलती है सारी. नहीं अच्छा है. I agree. बिकॉज मैं कुछ नहीं देखता हूँ, तो मैं तुम्हारी स्टोरी सुनता, हाँ ये अच्छी चीज है, ये अच्छा शो है, ये नहीं है. इनकी बात सुन के ना मेरे को अब भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब आ रहा है, व्हाट आई फील कि मैं, और अभी आपने भी बोला ना इतना सारा काम आप करते हो तभी भी आपके पास वेस्ट करने के लिए टाइम बच जाता है. तो ना मैं इंस्टाग्राम पे ना ये बहुत करती हूँ हर हफ्ते ऑलमोस्ट, कि कुछ तो ऐसा क्वेश्चन डाल देती हूँ, टेल मी योर प्रॉब्लम्स और वट एवर समथिंग और द अदर आई पुट, एंड देन उसके ऊपर जो भी रिप्लाईज आते हैं उसके कुछ ना कुछ बकवास से आंसर्स देती हूँ और पोस्ट करती रहती हूँ स्टोरी पे. और मेरे मैसेजेस में जो लोग मेरे को मैसेज कर मतलब वेट कर रहे हैं कि मैं रिप्लाई करूँगी, उनका अगर कभी कॉल आता है, अरे यार
एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है, पता है, एक्चुअली बिल्कुल भी टाइम नहीं है. मैं अभी जस्ट जैसा मैं एक फ्लाइट से दूसरे फ्लाइट में आई, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता. और बाद में वो जो स्टोरी पे रिप्लाईज करती ना, उसमें मेरे को किसी ने पूछा, मतलब किसी रैंडम स्ट्रेंजर का वो मैसेज था कि दीदी आपके पास इतना खाली टाइम होता है आप बोली शिट, मेरे पास इतना खाली टाइम होता है. तभी मेरे को रियलाइज होता है आई हैव फेल्ड एट लाइक मैनेजिंग टाइम since I have had to manage time constantly. This reminded me of, again, my year has been eventful. I'm realizing now through this conversation. This year, I asked myself, who am I when I'm not an actor? When I'm not working in my head, what happens then? And वो मुश्किल था, मुझे जाना पड़ा, first time holiday लेना पड़ा, फ़ोन साइड में रखना पड़ा, ऐसे लोगों से मिलना पड़ा जो मुझे नहीं जानते, उनके साथ बहुत बातें की मैंने, बहुत मज़ा आया. And suddenly I got in touch with a person जो एक्टर नहीं है, जो अमोल नहीं है, जिसका बैगेज नहीं है. And that was very helpful. So that distinction, to find that line कि हाँ मैं इसके beyond भी कुछ हूँ, I exist beyond social media. तो छोटी चीज़ हो गई, but beyond acting, actors का क्या problem होता है? This is not a Instagram created problem. Actors are also watching. I'm watching her, अभी ऐसे बैठी है, ऐसा बैठा है. We do that, no? थोड़ा थोड़ा तो हम कैप्चर कर रहे होते हैं, नहीं तो मेरे को लगता है तो काम है, ये तो मेरा काम है, तो आर्टिस्ट हूँ, ये तो मेरा आर्ट है, ये मेरी तपस्या है. बट यू हैव टू समवेयर समहाउ वन डे आई हैड टू डिसाइड, नो, आई एम नॉट एन एक्टर, आई एक्ट. आई एम नॉट एन एक्टर. वाह, आई थिंक ये I'll tell you, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना, इसको जब काट के रील पे डालेंगे बहुत चलेगा. मेरे दिमाग में ये चल रहा है अभी. मुझे ऐसा लगता है कि हमने इतना अपने दिमाग में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्लिकेट कर दिया ना कि नो लाइक आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ, देन आई नीड टू टेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, आई नीड टू. क्यों मैं ये बता रही हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे लगता है बेफालतू में इतने कॉम्प्लिकेट हो गए हैं. सिंपल भी तो हो सकते हैं. क्या करना है, रोज सुबह उठना है और टू डू लिस्ट बनानी है. So like Navya said, कि when you are in a position, when you get to do what you're doing, instead of complicating it with yourself to reach a point of trouble, कि oh no, I need a social media detox. Why did you push yourself to a point where a detox was needed, right? Like, let's kind of be self-aware in a fact, and it's very easy. I know the internet sometimes tries to convince you that it's very tough, but it's actually really easy if you just break it down into simple processes and don't complicate it. You know, look at it as a job if you are a creator. And the minute you do that, suddenly everything uncomplicates in your mind. Is uncomplicate a word? Yeah, I think so. Now it is. Yeah, it is now, absolutely. So I'm gonna go one question to everybody and then just. हाँ तो अभी हो गया सर, अभी डिस्कशन लंबा, हाँ डिस्कशन ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर दो नहीं हो पाएंगे. करिश्मा, you are obviously someone right now who's at about 5.6 million, 5.4 million. Yeah, you'll reach there also. The question is very simple. Do numbers really matter that much? Yeah, to be very frank, मैंने कभी aim नहीं किया था. I never saw it coming. I thought हो जाएगा, हो रहा है, चलता जा रहा है. But to be very frank, and if I have to be honest, अब matter कर रहा है. मतलब पहले नहीं था. To be very frank, पहले नहीं था. मुझे एक्टिंग करना था, वो मैं कर रही थी. बट मुझे नहीं पता था कि ये 1 million से 5 million हो जाएगा. Now I keep scrolling my phone, मैं insights देख रही होती हूँ कि आज बढ़ा, आज कम हुआ. Oh my God, आज इतने लोग unfollow कर दिए क्या? अरे ये क्या हो रहा है यार? ऐसा क्या कर दिया? अब हो रहा है. वो ट्रैप में जब आप फंस जाते हो ना, to be very honest, मेरे साथ तो हो रहा है. और अब मुझे लग रहा है कि 5 का 7 कब होगा, फिर 10 कब होगा, और फिर मैं 15 कब क्रॉस करूँगी. इसके कितने हैं, उसके कितने हैं. It's happening. No, I was just going to ask कि how much, किन चीज़ों में एक्चुअली आपको लग रहा है कि बेनिफिट होता है हैविंग नंबर्स, एंड किस चीज़ में लगता है कि इट डजंट मैटर, दैट इवन व्हेन आई हैड नॉट इवन 1 million, इवन व्हेन आई हैड 100,000, it was still the same, and even at 5.4 it is still the same. Where do these numbers actually matter and where do they not matter at all? See, I think जब आपके पास कुछ ब्रांड कोलैबोरेशंस आती है ना, जब वो कहते हैं ना पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियसली लोग देखते हैं कि अच्छा किसके कितने फॉलोअर्स हैं. बट इफ़ आई टॉक अबाउट कंटेंट, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी नंबर्स से किसी को जज नहीं करती हूँ.
कि इसके कितने हैं. मतलब ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अभी इतने एस्टैब्लिश नहीं है, जो वेरीफाइड नहीं है, बट आप उनका कंटेंट देख लो, इतना अमेजिंग होता है कि देख के ऐसा लगता है कि यार बस इतने ही नंबर्स है. आई मीन क्यों नहीं लोग पहचान रहे इनको, क्यों नहीं लोग जान रहे हैं. बट नंबर्स मुझे लगता है वो आपके लिए खुद के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है. अगर आपको या किसी और को आपका काम अप्रिशिएट करना है तो वो आपके कंटेंट पे जाए जो ना कि नंबर्स पे. This is where the contrast is. When you look at it from a place of motivation, passion, and basic just overall gratitude for being in a position of impact to talk about things that you're talking about and getting the love for it, that's when I don't think numbers matter. Definitely. But when you're a creator and you look at it as a business, which you have to look at time to time if you want to make it lucrative. जैसे जब मैं बोलती हूँ कि दो तरफ हुए, एक तरफ बेरोजगार भी हुए लोग और एक तरफ ये भी हुआ ना कि हम सब की लाइफ बन गई, कि जॉब मिल गया, पूरा का पूरा इकोनॉमी बन गया. So I think again, you are always stuck in a place as a creator when it comes to numbers, when you are constantly trying to bifurcate between these two things. If you look at your insights or you going to these numbers as feedback or as stepping stones, I think it uncomplicates the pressure a little bit in my head. Does that make sense? So I think as a creator, you're constantly trying to, you have 2 feet on 2 stones. One stone is the one which has your heart, jahan pe your audience is giving you the love, and that is the love that fuels you even on your tough days to get up and go to work. And on the other side, it is your job, so it's also the business. So I think Ajay Devgan bana pada hai sabka is waqt. No, absolutely. I think this is why we also, honestly, you are one of the few people who has a little bit of historical perspective on this. You've been there for so long कि आपको पता है कि जो ना कहाँ समझना है, कहाँ संभलना है. That's just something, and it's so valuable to have you here to tell these things. Ahsaas, again, you're someone who has been doing this since you were a child. You were literally a child actor, and now you've grown in this industry. And yet, I just find you one of the most real people that I know, right? And and it always surprises me because आप industry में रहते हो, इतनी चीजें काम करते हो, it starts affecting you. It starts. You stop being as real. You always have some pretenses on. Somehow you manage to avoid that. And I want to, I'd love to understand how does one, with everything that you're offered and all the glamour of it, the fame component, constantly being in the limelight, how does one stay real? I really don't know. It's a great question. मैं तो ऐसी हूँ. That's an honest answer. That's an honest answer. But I'm honest, just like this. I feel like I think I'll give the entire credit to my mother because she will slap me and if I try to fly and be like मैं बहुत famous हूँ blah blah blah, वो मुझे घर पे 2 पंजाबी में गाली देंगी और मुझे वापस अपनी नीचे ले आएंगी. But I think just the people you surround yourself with. My friends are not from the industry. They don't know the work that I do. So they just, I think them and my mom and just like the people around me, I think that really helps. Yeah, and I don't want to be like, हाँ मैं real हूँ भाई, मैं तो बहुत authentic हूँ, ये. But I'm just glad that I think हाँ, अगर can really होंगी relate to मम्मी me. थप्पड़ मारेगी. That's what it is. Yes. Great. Thank you, Ahsaas. Gajraj sir, मेरा question sir ये था कि आप, I mean, you've again had a journey. मतलब मैं उस दिन दिल से देख रहा था, and I saw you there, and I didn't know you were also part of that, and I was like, man, Gajraj sir कब से मतलब and it takes a lot of patience, and this year you have done a film as a leading man. Like what it's been. What a journey it's been, and what I think that I would love to learn from you is patience, कि कहाँ से, I mean, the world right now is impatient, एक तो बहुत जल्दी हमने बात भी की, पैसा आ जाता है फटाफट, everybody wants to make it very quickly, very right now. It's taken you time to get where you are. Now, when you see everyone around you, you also have 2 children of your own. How does one, build this patience? Is there any advice that you have? मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके पास प्लस में है चीज़ें तो आप कंप्लेन मत कीजिए. तो वो मेरे लिए मूल मंत्र है कि मेरे पास अगर है, क्योंकि लाखों हजारों टैलेंटेड लोग हैं यार,
इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं. मैं लकी था, मैं सही समय पे सही जगह था, सही लोगों के बीच में था. वो रोल मुझे मिल गए, वो पार्ट मुझे बधाइयों मिल गई अमित शर्मा की वजह से. आनंद तिवारी, अमृतपाल ने ये दे दिया, मजामा दे दिया, माधुरी जी के साथ काम. लेकिन मैं ऐसा कैसे मान लूं कि मैं ही एक्सेप्शनल था, मैं ही अकेला था, मैं ही डिजर्व करता था? नहीं, हजारों लोग हैं, कम से कम 5,500 मिनिमम. तो उसमें अगर मेरे पास ये अगर है और उसके अंदर मैं बोलूं कि यार मुझे उस पिक्चर में क्यों नहीं पार्ट मिला, या मैं ट्रिपलिंग में ये चितवन वाला पार्ट क्यों नहीं कर पाया मैं, तो वो कंप्लेन जब आप बंद कर देते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हैं. तो पूरे प्रोसेस में मैं अगर देखूं एक ही चीज़ मैं फॉलो करता हूं कि हाँ ये नहीं हो रहा तो. और वो एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है. तो वो एक उस चीज़ को सबको फॉलो करना चाहिए, उससे चीज़ें आसान हो जाती. थैंक यू सर, दैट्स सच अ लवली आंसर. मैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि एक आप इसने कम बोलने का दिया था, बट सर ने प्रेशर में आके जल्दी खत्म कर हाँ, बट ये क्वेश्चन ना इसमें है ही नहीं, बट आई एम जस्ट नाउ गेटिंग क्यूरियस. सर, डू women slide into your DMs? इसमें आप लंबा जितना लंबा देना सुंदर सुंदर मैसेज आते हैं प्यारे प्यारे से, लेकिन मतलब कट वाले नहीं। मैसेजेस प्यारे हैं या जो भेजते हैं वो सुंदर मैसेजेस सुंदर हैं, जो भेजते हैं सुंदर हैं? लोग प्यारे मैसेज भेज रहे हैं तो प्यारे लोग होंगे. वो तो ऐसे मैसेजेस मेरी जो पत्नी है वही डिलीट कर देती हैं. तो उनके पास सारे पासवर्ड हैं सारे. तो फैंटास्टिक. हो सकता है कुछ आप तक पहुंचे ही ना हो. हाँ, आर्काइव में भी नहीं रहते हैं. इससे पहले कि ये देखे. संजना जी आर्काइव से भी निकाल देती हैं. Prajakta, one of the things I really admire about you is the fact that, again, I've known you for a while now, and I have, no matter any time I've met you, any time we have chatted, any new thing that you're doing, it's always so cool to see that you still have that curiosity and that excitement about everything, and you're also very grounded. How do you maintain this curiosity, this excitement about the work you do? I think adding on to what Ahsaas said about surrounding yourself with people who'll keep giving you reality checks from time to time, which can be every day or it can be after a few milestones जब आपको ऐसा लगता है. When I started off ना making content, मुझे लगा था बस इतना ही है कि every Thursday videos डालने, बस यही life होगी. फिर ट्यूसडे और सैटरडेज भी वीडियोस डालने लग गई. फिर एक बारी कॉमिक कॉन पे बुला लिया. फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे वीडियोस शुरू हो गए. फिर धीरे धीरे करके लाइव इवेंट शुरू हो गए. फिर पैनल डिस्कशंस हो गए. पता भी नहीं था कि कभी कॉल आएगा कि डू यू वांट ऑडिशन फॉर अ नेटफ्लिक्स शो. Then that happened. Then you came to me with a short film which changed my life. Idea ही नहीं थी. तो I feel like I approach it with curiosity because I am curious. I don't know the scope of the job that I am in right now, and that is what keeps me on my toes, and it's very exciting. You know, the fact that not one day is like another, that I don't know. I used to find a lot of peace in the fact that, oh, this is my 5-year plan. Now I find peace in the uncertainty of things, where I don't want to make a 5-year plan because God knows where the internet is going or where this platform is going. So why will I want to limit myself with that? And I think the grounded bit, though, I also understand, and I have constant reminders where I think of where this is all stemming from. Like, why am I getting the opportunities that I get? Where is it all coming from? And it's coming from my audience. So I know that the minute that starts turning sour because I changed as a person or I didn't know how to handle it, is when it all goes downhill. Such a honest answer. Thank you so much, Prajakta. Navya, I see everyone over here is, of course, this is a Yuvaa All Stars, and Gajraj Sir is obviously the youngest. But everyone's young over here, and in the creator and actor ecosystem, being young is actually it's cool that you're young and you're able to do all this and people support you for that. But as an entrepreneur, as somebody who's also, running these foundations, these companies, youth is actually looked at almost as you're too young, you don't have that experience, why should I listen to what you have to say? Why should I, care about what you are doing? You're just 23, 24.
how do you respond to that? How do you work with in a system where it's almost where youth is seems to be against you, but you are part of a world where young people are doing incredible work? I mean, I think that's a really good question and something that I'm Thank you. sure all of us have probably faced at some point. I've certainly faced it. I feel like a lack of experience cannot be a reason why you don't step up and raise your voice against something. And I feel like I don't want to wait till I'm 70 and have 70 years of experience to change the world or do something that will change the world. I feel like 80% of this country is youth. 80% of us today are between the ages of 18 and 35. And if we want to create this future where, we are socially, we focus on social causes, we have equality, then I can't wait 30 years to say, okay, I have 30 years of experience and now I'm going to go and do something. I think like we've been talking about today, we all have a platform because of social media or because of people like you who allow us as young people, and I really appreciate that about Yuvaa, that you really encourage the youth to speak, and I think that that's so important, because if 80% of this country is the youth, then why are we not on those tables? Why are we not having those conversations? Why are we not talking about what we want as young people, as young creators, as young entrepreneurs, as young women? We should be creating these policies. We should be in parliament. We should be talking about these things, because that's when this future is going to be built. And if we don't build it, who's going to build it for us? We've inherited this world after the pandemic where we've seen 2 years of devastation in everyone's lives. And I think that it's our responsibility. If I'm not going to step up and say that, I want to speak for women empowerment because I'm a woman, and 30 years from now when I have a daughter, I want her to grow up in a world where, she does feel equal. And I think that that's exactly what I say to people who say that, you're 25 and you don't have experience. Yes, I don't have experience, but I will learn that on the way. But if today I don't use this opportunity to speak up, then I'm not just doing a disservice to myself, but I'm doing a disservice to the future generations that are going to come and say that, why did you not say something? Because of a lack of experience. So I may sound stupid when I say it, but at least I said something. It's not stupid. I think it's very cool. Absolutely. This is also the other reason that you are on this panel, because you always say nice things about Yuvaa. Please take note, everyone. Free promotion. Yeah, thank you. It's not stupid at all. Like when I was 23, 24, हम लोग बस ये बातें करते आज बियर कौन पिला रहा है? That's what हम भी वही बातें करते हैं, लेकिन कैमरा के सामने नहीं करते. कैमरा के पीछे होता है. क्या बात है. Srushti, I actually have a very simple question to you. How are you so brave, man? Because I feel like, the kind of work, the kind of things you put out there, I've heard Bachpan, I've heard Chill Kind of Guy. These are really tough, big things to talk about. It's not easy to be vulnerable in front of the world, and you're doing it all guns blazing. You are putting yourself out there without a care, and yeah, I would just love to know how does one get to be this brave? I have the perfect amount of childhood trauma for it. So it's I think I have people have clapped exactly for the very amount long. of childhood trauma that it takes for you to be brave in every situation. As I said, if it becomes something becomes your as a natural habit, like being yourself is what you do naturally, तो अपने आप वो कैमरा के सामने आपके काम में दिख के आता है. So that's what I've been. If that's called being brave, then that's what I've been doing off camera and off work, just in life, just. That's how I live. That's why it comes out. मतलब मेरे गान और अब भी मेरे को समझाइए. I love that. I love that answer. Express because you want to, not because you want to be liked. है ना? बस खत्म. Simple. Yeah, as simple as that. Amol, तुम्हें ना बोलना बहुत पसंद है. हाँ, तुमने मुझे बहुत बारी ना बोला है. मैंने बहुत तुम्हें ऑफर चीज़ें की थी और तुमने सबको मना कर दिया. बट ना तो बोलता है. So नहीं, I actually see that's one of the things that I admire about you, because I don't know how to say no that easily. Or that, I mean, when I say easily, I mean like, being so sure of myself, being so sorted in my head, saying, yaar, ye mujhe nahi karna. No matter who's the person, must be a friend, very dear friend, but it's okay, I can say no. But I want to understand, yaar, how do you cultivate that
in you to that surety, and कि जहाँ पर ना मतलब एक आपको खुद ही, I've seen your journey also, of course, that it's not, there are times where you've never been offered things, and then when you're offering things, and to have that sortedness in your head to say यार नहीं ये नहीं मुझे करना, I will do what I want to do, and maybe I'll wait for it and do that, but rather than doing whatever is offered to me. How do you cultivate that? How do you again get to a place where you're comfortable with saying no to things? It's not easy. And I think सबका mostly answer निखिल वही है. You're asking good specific questions, but सब लोग बोल रहे हैं मुझे नहीं पता. Because I think there are certain things that come naturally to us, or it comes naturally to Ahsaas or Prajakta or Srushti. ये अब मैं हूँ शायद, and it is not that every day I am also very confident about who I am. As an actor, you live a life of rejection. That's what you live, especially when you're starting out. And it is even more difficult because you're an actor. Your brain tells you that वो आपके काम को मना नहीं कर रहे, आपको मना कर रहे हैं. आपकी हाइट इनफ नहीं है, आपका रंग स्किन का सही नहीं है, आपका नाक थोड़ा सा टेढ़ा है, आपका. So it is a very personal rejection. It's not like you go with a resume and they're like, oh, I don't like your coding, go to some other company. It is like, I don't like you. That's what it sounds like when you go back home. So you have heard a lot of no's. That's what you hear mostly. फिर एक yes आता है 6 महीने में, वो नहीं दिखता है. So you think that is the toughest thing, कि कितना no सुनते हैं यार हम लोग. But then you get into a position in life जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है no, and then you realize that it may be a little tougher than hearing no, because when you hear a no, किसी ने आपको no बोला, अरे करके आगे चले गए, इसको पता नहीं है, आगे चले गए, अब भूल गए. You've learned to do that. 2-3 महीना ऑडिशन देने के बाद आपको प्रैक्टिस हो गई कि हाँ जल्दी से नो बोलो, मेरे को आगे जाना है नो सुनने. बट जब आपको नो बोलना पड़ता है, जब निखिल आपको 2-3 दिन तक फोन करता है और बोलता है अमोल क्या प्रॉब्लम क्या है यार, अच्छा तो है, तेरे को स्क्रिप्ट भी ठीक लग रही है, सब ठीक, तो क्यों नहीं. No, but it is, I like working with people I like. I prefer that. I have sometimes I mostly take that into account. But नहीं होता है, कई बार अंदर से नहीं आता है. So I have to remind myself कि मैं आया क्यों था यार. मैं आया था क्योंकि मुझे मज़ा आता था. और ऐसा नहीं है कि मैंने सारा काम में हमेशा मज़े किए हैं, but whenever possible, now I have the privilege that I will choose where I can imagine myself enjoying it. Yeah, no, I think ultimately, from what I'm hearing everybody say, ultimately it's about being true to yourself. कि आप अगर आप जो कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उस पे भी true रहो, जो नहीं कर रहे हो, you should know that you're not. So, thank you. I love you anyway, मैं तो यहाँ पे भी बुलाया, तूने हाँ बोल दिया इस बारी. करेंगे, मैं आज ही जाने से पहले कुछ एक आइडिया तेरे दिमाग में डाल के जाऊंगा. Done. We are all here right now. For me, that in itself is just such a. Last year, अगर इस time December में ये कैसे कर पाते यार? I mean, I'm just so. Sometimes I just pinch myself. I'm like 2 साल यार. We've all gone through so much in terms of even mental health, thinking कि will this ever come back? And now we are here with everyone. I'm just so grateful about that. And that's really the note I want to also end on, asking you all. What are you grateful about in this year? Also, what are you proudest of? And what have you learned? So basically 2020 is a year where I took off. I never saw it coming, to be very frank. It was never planned. Though it was a roller coaster ride for me. बहुत ऊपर नीचे होता रहा. But वो एक दिन होता है ना जहाँ पे आपके तारे सितारे चमक जाते हैं. आप कहीं पे भी हो, people are just screaming your name. They want to take pictures with you. उनको पता है RJ करिश्मा कौन है, वो चिल्ला रहे हैं. I still remember one incident. I was in my building's lift and already ने वहाँ पे एक बच्ची थी lift में. I was wearing a mask. She politely asked me, "Are you RJ Karishma?" I said yes. The moment I said yes, she froze. She didn't utter a word. कुछ भी नहीं बोला उसने. She was shivering. मतलब ऐसे वो पूरा थरथराती है ना body. आप अपना mask नीचे करोगे please? मैंने जैसे ही mask नीचे किया, she started crying. Like hell, मतलब इतना रो रही है वो बच्ची. I thought शायद मतलब I have this unibrows ना, तब उस टाइम पे threading किया नहीं था. मुझे लगा ये मतलब to be very frank कि I mean कोई राक्षस मेरे लिफ्ट में था और ये क्या हो गया. तो to be very frank, तो I didn't realize कि वो क्यों रो रही है. Then she said, "I love your work."
And that moment, I got a flashback where I'm meeting Shreya Ghoshal for the very first time in my life. उस टाइम पे वो बच्ची मुझे करिश्मा लगी और मैं श्रेया घोषाल. And that was a moment for me. I was like, my God, Karishma, you did it. That's a beautiful moment. So, yeah. What have you learned? Anything that you've learned about this year? I think जो हम सब लोग बात कर रहे थे वो ये है be true to yourself, है ना. मतलब जितना pretend करोगे ना, मतलब you can't fool your audience. They'll catch you like this कि आप बन रहा है. This is what I have learned. Thank you, Karishma. Same question. Firstly, I'm very grateful for all the opportunities I've gotten this year. We've gone through a pandemic. We've gone through some really unpredictable times. Like there were times where I felt like कि काम शायद नहीं मिलेगा. But इस साल I had like four releases, which was crazy. And one is releasing like next week also. So yeah, so like I'm really grateful for that. I'm proudest of the podcast Dear that I Teenage did Me? this year with Yuvaa. It's called Dear Teenage Me. And we did 2 seasons. We've completed the 2nd season. So like ek saal mein we've done 2 seasons of it. So I'm very proud of that. Like I also got to know that this is something that I can do. This is something that I'm good at. So I'm proud of that. And yeah, like I'm again grateful for meeting you, having such great friends this year, and yeah, just very grateful in general. Thanks to Yuvaa, yes. Yeah, obviously. Learned? What have you learned? I think just being more authentic and not being so hard on myself, not hating myself so much is something that I've learned this year. Also because of the people that I've come across. I've come across some really nice people this year. So like they've taught me to not be so rude and so bad to myself. Like I always preach being kind to others, blah, 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 saying thank you to others, saying sorry to others. But like I also want to say thanks to myself and sorry to myself. So that is something that I've learned. Thank you. Very Snoop Dogg moment, na there. Very Snoop Dogg moment. कि I want to thank me. अरे यार सर ने बटन खोल लिए हैं. अभी थोड़ा रिलैक्स हो मेरी जाए. नज़रों में तो 2-3 चीज़ें हैं. एक तो जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़क्र है कि एक फिल्म हम लोगों ने बनाई थी लास्ट ईयर मजामा, जो इस साल रिलीज़ हुई, और उसको लेकर मैं बहुत डरा हुआ था. बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है वो, और उसके सब्जेक्ट को कैसे लोग रिसीव करेंगे, और प्लस उसमें जो मेरा पार्ट है वो माधुरी जी के साथ उनके हस्बैंड का रोल मैंने प्ले किया, तो उसको लेकर भी डरा हुआ था कि इसको ऐसा तो नहीं बोलेंगे लोग कि यार किसको खड़ा कर दिया. वो इतनी बड़ी स्टार और दीवा हैं, और उनके साथ बड़ा सेल्फ डाउट. मतलब शूट में तो खैर सब कुछ अच्छा होता है, चल रहा था, लेकिन वो एक उसके रिलीज़ के बाद लोगों ने उसको अच्छे से रिसीव किया, और अभी तक जब मैं बाहर जाता हूँ और मुलाकात होती है लोगों से, उसको लेकर बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन फिल्म को लेकर है. वो एक फ़क्र की बात है. और दूसरी फ़क्र की बात मेरे लिए ये है आज का दिन कि मैं यहाँ पर युवाओं के बीच में हूँ. मैं तो वो मेरे लिए बड़ा अनरियल सररियल सी चीज़ है. मैंने ऐसा सोचा नहीं था 1 महीने पहले कि ऐसा हो सकता है कि मैं 50 प्लस के एज ग्रुप में होने के बावजूद 20-25 साल के लड़के लड़कियों के बीच में मुझे मौका मिलेगा. और नहीं, मुझे मालूम है मैं सपना नहीं देख रहा हूं. मैं तो ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है. मैं ये आते हुए सोच रहा था, ये जब मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, और कि यार ये क्योंकि अभी बहुत सारे राउंड टेबल हो रहे हैं ना एक्टर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ, तो एक बार फोमो भी हुआ था मुझे कि यार मुझे उसमें नहीं बुलाया. लेकिन यहाँ पर जो आके रमे कि यार कितनी गजब की बात है कि ये सब यंग क्रिएटर्स हैं,
और उसके बीच में जाके मुझे बैठने का मौका मिलेगा, शायद मैं कुछ बोल पाऊँ या सुन पाऊँ। बोल पाया, मुझे मौका दिया लोगों ने। What I'm grateful for is so much. The health of my family, my friends, my closer people, me, my work, definitely. My audience, I'm extremely grateful for everything. तो वो तो never ending list है. What am I proud of? After a really long time, 2022 started with me having no work in hand. But the way that it has ended, what I'm most proud about is I didn't waver on both days. Not when things were not great, also when things were peaking. Like I had not expected a Dharma film. And yeah, that released. I had not expected Mismatch to do what it did. At the same time, I had not expected that I'd actually go to production houses and writers and platforms and pitch something I have written. And I didn't waver. It didn't get to the bad days didn't get to me, but the good days also didn't get to me, and I'm very proud of that because I kept thinking, मैं तो खत्म हो जाऊंगी. This is so overwhelming. मेरे बस की नहीं है ये handle करना, पर मैंने कर लिया, so I'm very proud of that. And the learning is very connected to this. I have learned that there is a lot of peace in uncertainty. There is a lot of peace in not having your shit together 24/7. There is a lot of peace in waking up on some days and be like, क्या करना है आज, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो. I think मैं तो बड़ी खुश हूँ वो जान के. So that was a very important lesson for me. Yeah. Wow, this is such a beautiful answer. We are all very proud of you. Navya? I think grateful for my family always. Everything starts and ends with them. I think what I have learned, सर ने already बोल दिया, लेकिन इस साल मैंने सीखा कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि तब भगवान के मन का होता है और वो कभी हमारे लिए कुछ बुरा नहीं चाहेंगे. और I think proud, I would say that, you know, I have been asked to come to a lot of places and I've often doubted why. And I feel proud that 1 घंटे बाद मुझे ये विश्वास हुआ है कि मैं आज इस कुर्सी की हकदार मेरे काम की वजह से पाया है और मेरी फैमिली या मेरे नाम की वजह से नहीं. तो आई एम प्राउड दैट आई बिलीव दैट एट द एंड ऑफ द डे. आई एम ग्रेटफुल दैट मैं जो भी इस साल मैंने जो भी काम किया है, जो भी लिखा है, वो सब मुझे नहीं लगता था कि कभी भी ऐसे मास ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी. तो आई एम ग्रेटफुल कि इतने सारे लोगों ने वो सब एक्सेप्ट किया, क्योंकि बहुत सारी अनकन्वेंशनल चीज़ें बोल रही थी मैं, और मुझे सच में नहीं लगा था. वो होता है ना कि अगर आप कुछ भी नया करने जाओ तो आपको पहले हेट मिलेगा, पहले रिजेक्शन मिलेगा. वो नहीं मिला मुझे. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. जो भी मैं बोल रही थी वो सब ईजीली एक्सेप्ट हो गया. और तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. और वॉट आई एम प्राउड ऑफ आई डोंट नो रियली. मुझे मतलब अभी तक नहीं समझ में आया वॉट आई एम प्राउड ऑफ. तो मेरे को याद ही नहीं रह रहा है कि मैं कौन सी चीज़ को लेके प्राउड नहीं हूँ. अभी तक मैंने सेलिब्रेट नहीं किया है एक बार भी कोई चीज़ को, तो अभी तक तो नहीं हूँ मैं. और वॉट आई हैव लर्नड इज़ कि ऐसे टाइप के जवाब नहीं देने चाहिए. आई हैव अ लॉट. दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न कि आई हैव सो मच टू लर्न. मैं बहुत ऐसा बकवास कर देती हूँ फ्लो में. तो वो दैट इज़ समथिंग आई एम लर्निंग एक्चुअली. आई हैव नॉट लर्नड येट, वो तो क्लियरली, बट ऐसे ही जवाब देने चाहिए because this is you. You know, and everyone's actually being themselves. और मेरे को ऐसे एक पॉइंट पे लगता था लाइफ में कि बेस्ट ह्यूमन बीइंग तो मैं ही हूँ और सबको लेसन्स तो मेरे से ही लेने चाहिए. तो अभी मेरे को वो भी मैंने सीखा है कि बिल्कुल भी बेस्ट ह्यूमन बीइंग मैं नहीं हूँ. मेरे पास बहुत है सीखने के लिए और बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे लेसन्स है अभी तक जो आने बाकी है. तो दैट इज द बेस्ट लेसन. कि बहुत लेसन्स है सीखने को. अमोल. Thanks to Yuvaa. Correct. I learned a lot this year. मैं एक तो मुझे ज़्यादा टाइम मिल गया सोचने का, इससे मैं कंफ्यूज हो गया. Grateful for a certain not so great phase. That the sleep wala thing, all this thing, it was at that time it was like not great. But I'm grateful because of course then you, in those times you learn a lot about yourself.
I tried many new things this year. ये 6 साल से proud हूँ मैं, ट्रिपलिंग आ रहा है, 3rd season आया इस साल. And I was asked to make a speech, मेरे से वो भी नहीं हो पाई because मैं suddenly emotion में आ गया. And I can now say, in retrospect, I hope I'm able to complete it without getting emotional, is that this is a character that this is a character that in 2016 some people believed I will not be able to do. Maybe rightly so, but some people like, Amol, Chitwan, maybe. And I was like, Arey Baba, mujhse lo mat ye. I went to Arnav, I said, bro, matlab, please don't take it away from me. मेरे पास काम नहीं है. I need this. और इसमें जो करना होगा मैं करूँगा, मैं नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन मेरे को करना है. Don't take it away from me. And I learned from them that ability to put your trust into someone else. In this case, it was me. And then 6 years later, sitting in a hall where everybody's crying, it's that kind of thing. किसी ने आप पे विश्वास दिखाया और season by season, you are proving them right. Correct रखा था तुम्हें ना. This is very unlike me. You've known me for a while. This is very unlike me. But I think this is something I've learned this year. I have opened up more as a person. I learned that sometimes you contain yourself. Sometimes you hold back your brilliance because you don't want to make other people uncomfortable. I have been that person. I want to be nice. I want to be polite. I want to make people comfortable. I learned to accept those parts of me also. कि नहीं यार मैं हूँ, कुछ चीज़ों में मैं अच्छा हूँ. But to be able to accept the great parts of you and to be able to live that, I also accept the bad parts of me. Of course, I won't say it out here, but I will accept to myself, because we reject those feelings. We reject anger, we reject hatred, we reject shame, we reject guilt. But it is you. We've said statements about ourselves to ourselves. And I have begun that process, and I hope I'm able to continue that. I want to break all definitions of who I am and who I can be and what I can do. But defining yourself is limiting yourself, and I don't want to limit myself. Baba, that was beautiful. Beautiful. Thank you so much. What a beautiful emotional thing. But one thing it is a privilege to have Srushti over here. Srushti, I'm sorry I'm putting you on the spot. If you can freestyle something, we would love to hear you. I don't freestyle. Whatever you want to do, anything, any rap you want to do of yours, we just love to hear anything. नया कुछ बनाने को नहीं बोल रहा, अपना जो आपका है. Actually, you know what? तो exactly for this situation, अभी तो मैंने ruin कर दिया बता के कि मुझे freestyle नहीं आता, but मैंने ना लिख रखा था. Best. मैंने एक rap लिख रखा था जो ऐसा pretend freestyle है कि कोई बोलेगा कि freestyle कर दो तो वाला करूँगी, लोगों बोलेगा freestyle है, अरे हमने ये काट देंगे इतना अच्छा YouTube बना लिया. तो मैंने लिख YouTube से रखा था. काट देंगे. हाँ? I'll say freestyle करो. हाँ, ये वाला part edit कर दो. Best. So you want me to freestyle? Yes, please. So now, I'll freestyle for you. Huh? I'm losing it, confusing it. I'm rapping off the top of my head. I don't know what I just said. I don't know where this will go. I'm just trying to go with the flow. I got no time to take it slow from here. Next line is probably gonna take me pretty low from here. I guess I need to buckle up, so baby, hold my beer. Just wanna make it clear that I've been rapping at 100 beats per minute. I never thought I could freestyle, but baby, now I'm in it. I guess I'm gonna win it, judging by the look on your face. I guess I'd rather the race. You're not the first, not second, not even third place. What a waste of space even. Keep yourself moving. Take the next left and go, cause I just stole the show. Wow. No, thank you so much, everyone. This has been such a privilege and beautiful. I'm so happy that we can end the year with this. Thank you so much. Can we have a round of applause for everyone over here? We'll just take a picture